Justice, may I have your Lordship's permission to declare the ceremony open? Thank you, Your Lordship. With the permission of Honorable the Chief Justice, the swearing-in ceremony is declared open. Now I would read out the notification dated 2nd January 2026, issued by the Government of India, appointing Shri Ramesh Chandra Dhimri and Ms. Nirja Kulwant Kalsar as additional judges of Punjab and Haryana High Court. I quote, in exercise of power conferred by Clause 1 of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Ramesh Chandra Dhimri and Ms. Nirja Kulwant Kalsar to be additional judges of the Punjab and Haryana High Court for a period of 2 years, with effect from the date they assume charge of their respective offices. Signed, Joint Secretary of Government of India. Unquote. जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की अपर न्यायाधिपति नियुक्त हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की अपर न्यायाधिपति नियुक्त हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगी। अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगी तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगी। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगी। Additional judge of the Punjab and Haryana High Court, do swear in the name of God Having been appointed as additional judge of the Punjab and Haryana High Court, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or evil, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws.